Carolus Linnaeus, father of taxonomy; Aristotle, father of biology and father of zoology; Panchanan Maheshwari, father of Indian embryology; Mendel, father of genetics; Thomas Hunt Morgan, father of experimental genetics; Charles Darwin, father of evolution and father of modern evolutionary biology; Norman Borlaug, father of green evolution; Mogambo Swaminathan, father of Indian Green Revolution; Theophrastus, father of botany; Robert Hooke, father of cytology, cell biology; Ernest Haeckel, father of ecology; Ramdev Mishra, father of Indian ecology; father of modern ecology is E.P. Odum, which is not in NCERT; father of mutation, Hugo de Veris; father of blood circulation is William Harvey. And some other fathers are father of pathology, Rudolf Virchow; father of immunology, Edward Jenner; father of blood group, Karl Landsteiner; father of genetic engineering, Paul Baer; father of embryology, Karl and von Baer; father of medicine, Hippocrates; father of microbiology, Anton von Leeuwenhoek. All scientists name. There are 10 units. We will cover all 10 units. Unit first, diversity in living world. Chapter 1, living world. Ernest Mayr, aka Darwin of 20th century. He had a triple crown of biology. He given a biological concept of species, which is a currently accepted definition of species. He is under top 100 goated scientist of all time. Carolus Linnaeus, वो करेला, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वाला. इसने 3 काम किए: बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, विच इज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्रिस्टोफर नोलन वाला अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन. ही इज़ अ फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी. आफ्टर कैरोलस लीनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन विच इज़ अर्लीस्ट. इसने अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मोर साइंटिफिक. R.H. Whittaker in 1969 proposed a 5-kingdom classification, 3 open mark arborals. Dmitry Ivanovsky in 1892 इसने बताया कि मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, बिकॉज ये पास कर जाता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से. M.W. बिजर्निक इन 1898 इसने उस मोज़ाइक डिजीज़ को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला टोबैको प्लांट से और बताया कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है इन प्लांट. और इसने बोला कंटैगियम वाइवम फ्लूडम, और इसने वायरस को ढूंढ निकाला. ही कॉल्ड दिस न्यू ऑर्गेनिज्म एज वायरसेस. W.M. Stanley in 1935 virus could be crystallized and crystals consist of large protein. T.O. Tyner discover viroid in 1971. अब कार्ल लीनियस के आर्टिफिशियल और अरिस्टोटल के अर्लीस्ट अटेम्प्ट के बाद जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, विच इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. यूनिट 2 स्टार्ट्स. Katherian Isau. She dominated at the field of plant biology even at the age of 99. Earliest publication, curly top viruses spread through phloem. Published plant anatomy in 1954 and published anatomy of seed plant in 1960. This was called as a Webster of plant biology. Unit 3 starts. Cell wala, cell structure and function. G. and Ramchandran discovered the triple helical structure of collagen, which is the most abundant protein of animal kingdom. इसके क्रम से प्रेरित होकर लिनियस पॉलिंग ने अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बना दिया. मैथियस शील्डन 1838 aka German botanist examined the plant. All plants are composed of cells which forms tissue of the plant. Theodor Schwann 1839 aka German zoologist studied the different animal cells. Cells had thin outer layer which is today known as plasma membrane, and he also studied the plants. Presence of cell wall is the unique characteristics of plants, and इसने propose किया hypothesis भी that bodies of the animals and plants are composed of cells and product of cells. Rudolf Virchow in 1855 omnis cellula is cellula modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give the cell theory final shape. But Sheldon ने तो cell theory नहीं दी थी, I mean hypothesis ही नहीं दी थी. क्रिस्टियन ग्राम, इसने ग्राम स्टेनिंग करी थी, वही पॉजिटिव ग्राम टेस्ट, नेगेटिव ग्राम टेस्ट, रिटेन डाई. इन 1950 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड. अब इसका यूज़ करके इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने दिया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल.
Anton von Leeuwenhoek discovered the first living cell. Robert Brown discovered the nucleus in 1831. Camillo Golgi in 1898 discovered the Golgi bodies. In same year, वायरस डिस्कवर किया था बिजर्निक ने. In 1953, discovered Pallade particle, later called it as ribosome. Fleming discovered the chromatin, condensed structure of chromatin called chromosome. Watson and Crick, इन्होंने proposed किया double helical structure of DNA. In 1953, same year जब ribosome discovered हुआ था as a Pallade particle. Fourth unit started, plant physiology. Melvin Kelvin discovered the Kelvin cycle, C3 cycle, use of radioactive carbon, C14, tracer technique. Joseph Priestley in 1770, bell jar experiment, importance of air. In 1774, discovered the oxygen. Jan Ingenhouse's experiment took a aquatic plant hydrilla and Joseph Priestley का सेटअप लेके एक बार लाइट में एक बार डार्क में डाल के O2 के बबल निकाल दिए जान इंजनहाउस ने. Julius von Sack, glucose is present as a starch and chlorophyll present in the chloroplast. Julius von Sack discovered in 1854. T.W. Engelmann gives first action spectrum of photosynthesis. Oxygen comes from water, not from CO2, is confirmed by or told by Cornelius von Neil. Peter Michel gives chemiosmotic hypothesis. Hatch and Slath pathway, C4 pathway. Blacksman law of limiting factor come into effect in 1905. Embeden, Meyerhoff and Parnas, इन्होंने scheme of glycolysis was given and it also referred to as the EMP pathway. EMP, Embeden, Meyerhoff, Parnas. Hans Krebs given Krebs cycle. Charles Darwin and his son Francis Darwin observed the bending of coleoptile in canary grass. F.W. Wendt ने ऑक्सीजन आइसोलेट किया था from the coleoptile of oats seedling. E. Kurosawa in 1926 discovered the Bakene disease, foolish seedling disease in the rice seedling causes by fungal pathogen known as Gibberella fujikurovi. F. Skoog and his co-workers formed the internodal stem of tobacco stem callus and इसमें इन्होंने ऑक्सिन, वेस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट मिल्क और डीएनए इनको मिलाकर नया टोबैको प्लांट बना था. एज यू नो साइटोकाइनिन का कमाल जो कि डिस्कवर किया था मिलर एट एल इन 1955. ही डिस्कवर्ड द काइनेटिन. Kinetin is a modified form of adenine, is a purine, and kinetin discovered in autoclaved herring sperm DNA. And there is also a natural cytokinin which is a zeatin, which forms in corn kernels and coconut milk. Kinetin does not occur naturally in plants. Zeatin occurs naturally in plants. H.S. Cousins in 1910. It's about ethylene. Confirmed the release of volatile substance from the ripened orange that hasn't ripened or stored unripened banana. Unit 5 starts. Alfonso Corti work on cardiovascular system of reptile and mammalian auditory system. Nasal scientist discovered the nasal granules. Ranvier scientist discovered node of Ranvier. Addison scientist, he discovered the condition of adrenal gland failed to produce enough hormones, especially cortisol and often aldosterone. This condition is now called as Addison's disease. Unit 6 starts. Panchanan Maheshwari, aka father of Indian embryology, he worked on embryological aspects and popularized the use of embryological character in taxonomy. 1951 family planning were invented. 1971 MTP Act, सब कुछ बैन हो गया. 270 MTP Act, only abortion is allowed but child detection is not allowed. मेल और फीमेल है या नहीं पता चलेगा.
Unit 7, the most important unit. जॉर्ज मेंडल वर्क फॉर 7 years 1856 to 1863. इसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दिया. इसने दो बड़े काम किए इसकी मदद से. फर्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एक स्टडी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसमें इसने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके दो काम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत सारे एक्सेप्शन थे. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ यूनिवर्सल लॉ. लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन लाइक लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रॉपी, ये इसके एक्सेप्शन थे. एंड उसके बाद उसने दूसरा एक बड़ा काम किया जो कि है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन एक डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें इसने और एक लॉ दिया जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. उसके बाद उसके 4 डिमेरिट निकाल कर उसका लॉ बंद कर दिया. Hugo de Vries, Karl Koretz and von Schermack in 1900 independently rediscovered the Mendel's results, and बाद में by 1902 chromosomal movement during meiosis has been worked out. तो अब सारे साइंटिस्ट क्रोमोसोम में मेंडल का जीन घुसाएंगे. तो सबसे पहले आएंगे सट्टन एंड बोवरी, वॉल्टर सट्टन एंड थियोडर बोवरी, वॉल्टर वाइट वाला वॉल्टर, इन 1902. वॉल्टर सट्टन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया था, जबकि यह थ्योरी दोनों ने मिलकर दी थी. दूसरे नंबर पे आएगा थॉमस हंट मॉर्गन, जो कि है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. इसने सट्टन एंड बोरी वाले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया. तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय हिम. एल्फ्रेड स्टुटवंट, a student of Thomas, use the recombination frequency between the gene pairs and measure the distance between gene. These genetic maps are widely used in the Human Genome Project. He made the different genetic map. In 1891, Henking studied the spermatogenesis in some insects, and Henking discovered the X bodies, which was later identified as X chromosomes. Langdon Down in 1866 described the Down syndrome, Mangolism, 21st trisomy. Friedrich Mischer in 1869, DNA as acidic substance present in the nucleus. He named it as nuclein. Later Altman say nuclein is acidic, so rename it as nucleic acid. तो सबसे पहले म्यूरिस विलिकन्स एंड रोजालिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफरेंशिएशन से डाटा प्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, वाटसन एंड क्रिक के 1953 में वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया. एरविन चारगाफ, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजन वाज बेस्ड ऑन द पेयरिंग बिटवीन 2 strands ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इसने बोला कि एडिशन एडिनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन, aka number of purine is equal to number of pyrine, or purine divided by pyrine is equal to 1/1. Francis Crick proposed the central dogma. 5 Nights of Freddy वाला फ्रेडी ग्रिफिंडोर गया है चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए. तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ in 1928 in a series of experiment with the Streptococcus pneumoniae bacteria responsible for the pneumonia witnesses a miraculous transformation of the bacteria. वही आर स्टेन होगा तो बचेगा और एस स्टेन होगा तो मरेगा. हीट किल एस स्टेन होगा तो बचेगा, हीट किल एस स्टेन प्लस आर स्टेन होगा तो मर जाएगा. यही वाला एक्सपेरिमेंट दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1828 में. अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ को तो लग रहा था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगा, बट उसको पता नहीं था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है. फिर एरी, मैक्लियोड एंड मैककार्डी आए इन 1933 टू 1944. 11 साल वर्क किया इन्होंने, और इनको पता था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. इन्होंने प्रोटीन को तोड़ के प्रोटीएस बनाया, आरएनए को तोड़ के आरएनएस बनाया, और डीएनए को तोड़ के डीएनएस बनाया. इसमें इनको पता चला कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, बट लोग बोल रहे थे कि ये प्रूव करने के लिए तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत है, तो प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है. एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन 1952. इन्होंने सबका मुंह बंद करके अनइक्विवोकल प्रूफ दिया. They worked with the viruses that infect the bacteria called as bacteriophage. They used P32 for DNA and S35 for protein to infect them both, and use radioactive bacteria in DNA, and protein में radioactive bacteria नहीं बन पाया. That's why DNA is a genetic material. Messelson and Stahl
In 1958, they proved that DNA replication is semi-conservative. Taylor, in 1958, very simple experiment involved use of radioactive thymine to detect the distribution of new synthesized DNA in a chromosome was performed on Vicia faba pins. The experiment proved that DNAs in chromosomes also replicate semi-conservatively. We know that AUGC or ATGC in case of RNA can code for all proteins, and protein is made up of amino acids, and we also know that 20 amino acids can form all proteins. मतलब ये 4 न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे प्रोटीन्स अवेलेबल जो है वो बना सकते हैं, और सारे टाइप्स के प्रोटीन्स बन सकते हैं इन 20 अमीनो एसिड से। ये समझने के लिए सबसे पहले समझो कि मल्टीपल कोडॉन कैन मेक सिंगल अमीनो एसिड। मल्टीपल कोडॉन्स है वो सिंगल अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। जस्ट लाइक ये है, ये है, ये है, ये है, इन सारों ने एक सिंगल अमीनो एसिड्स को बनाया है, सेम अमीनो एसिड्स। बट एक कोडॉन, सिर्फ एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड्स को बनाएगा, और एक कोडॉन कांट मेक मल्टीपल अमीनो एसिड्स। ये एक कोडॉन है, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, यही कोडॉन दूसरा अमीनो एसिड्स नहीं बना सकता। ये कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड बनाएगा। अगर सिंगलेट का एग्जांपल लेके समझे तो एक कोडॉन एक अमीनो एसिड, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड, ऐसे 4 अमीनो एसिड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मतलब जितने नंबर ऑफ कोडॉन उतनी मैक्सिमम अमीनो एसिड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। अब सिंगलेट से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ले तो 1 2 3 4 ही अमीनो एसिड्स कोड कर सकते हैं, बट हमें चाहिए 20 अमीनो एसिड्स, बिकॉज वो 20 सारे अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। वो 20 अमीनो एसिड्स सारे प्रोटीन्स बना सकते हैं। सो सिंगलेट से तो 4 ही बने, डबलेट से देखे तो 1 2 3 4, 4 के 4 4 4 12 4 16 16 अमीनो एसिड्स बन सकते हैं मैक्सिमम, जो कि नहीं बनेंगे बिकॉज 20 अमीनो एसिड्स चाहिए। अब बात करें ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट में टोटल 64 अमीनो एसिड्स बनेंगे। तो अगर 64 का एवरेज लेकर चले तो एवरेजली 3 कोडॉन्स एक सेम ही अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। तो 3 डिफरेंट कोडॉन कैन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड्स। 61 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, और 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। अब जो हमने जॉर्ज गैमो का जो हमने ट्रिपलेट बनाया है, यह था सिंगलेट, यह था डबलेट, यह था ट्रिपलेट। सिंगलेट से नहीं बना, डबलेट से भी नहीं बना, ट्रिपलेट से बना। ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिखता है। इसे बोलते हैं ट्रिपलेट स्ट्रक्चर, जो कि बनाया है जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो सेज जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट। ये देखें तो हरगोबिंद खुराना जी, इन्होंने सिंथेसाइज किया था आरएनए के होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। इन्होंने आरएनए का होमोपॉलीमर बनाया था और कोपॉलीमर बनाया था। होमोपॉलीमर कैसे, जैसे लाइक ए यू यू यू, इसको होमोपॉलीमर बोलते हैं, और कोपॉलीमर लाइक AUG ये कोपॉलीमर है। ये बनाए थे इन्होंने, हरगोबिंद खुराना ने। कस्टम बनाए थे, मतलब ये अपने मन से बना सकते थे, और इनको सिर्फ ये नहीं आता था कि आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट कैसे करना है, ये इन्हें नहीं पता था, ये नहीं मालूम था। ठीक है, हाँ ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ इन्होंने पॉलीमर्स बनाए हैं, पॉलीमर्स आरएनए के। पूरा का पूरा आरएनए सीक्वेंस नहीं बनाया है, सिर्फ पॉलीमर्स बनाए हैं, सिर्फ पॉलीमर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं मार्शल नीरनबर्ग। इन्होंने डेवलप द सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेल फ्री सिस्टम मतलब सेल नहीं है, सेल जैसा सिस्टम है, जिसमें इसमें ये क्या कर सकते हैं, आया हुआ आरएनए का प्रोटीन बना सकते हैं, कन्वर्ट आरएनए इनटू प्रोटीन। मतलब हरगोबिंद खुराना जी आरएनए के स्मॉल स्मॉल पॉलीमर्स बनाते थे, और ये इसको सिंथेसाइज करके प्रोटीन बनाते थे, और पता करते थे कि कौन क्या कोड कर सकता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल खुराना ने ए बनाया, फिर नीरनबर्ग साहब ने बताया कि ए से लाइसिन बन सकता है, ये बताया। सेवरो ओचाओ साहब ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज बनाया। इन ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स कैन मेक आरएनए इन इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब मन मर्जी का पूरा आरएनए कैन बी मेड। मुझे समझो अगर AG AU CU CG C AC ये बनाना है, तो ओचावा साहब भी लाइक हाँ बना देंगे, पूरा का पूरा आरएनए सीक्वेंस पूरा। जबकि खुराना साहब सिर्फ पॉलीमर्स बना रहे थे, ये पूरा का पूरा आरएनए सीक्वेंस बना रहे। Jacob and Monod elucidation of Lac-Apron was also a result of close association between the genetics. They proposed the Apron model to explain regulation of gene expression in bacteria. Human Genome Project was an international project 1919 to 2003 to sequence and map the entire human genome. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सीक्वेंस एनोटेशन मेथोडोलॉजी के अंडर डीएनए फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करने के लिए ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स यूज करे गए थे। ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स वर्क करते थे ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। अच्छा, जो क्रोमोसोम 1 है बच्चों, इसका सीक्वेंस मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। दिस क्रोमोसोम 1 इज द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड। Alice Jeffrey. The technique of DNA fingerprinting was developed by him. Louis Pasteur Schwann neck experiment. By careful experimentation,
demonstrated that life comes from only pre-existing life. He proves the biogenesis. He used heat-killed yeast, water, and a swan neck wala वो flask. Operin from Russia and Helden from England proposed that first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule like RNA and protein. Operin and Helden wala model. Operin and Helden model known as chemogenesis. ओपेरन एंड हेल्डन के केमियोजेनेसिस मॉडल को एक्सप्लेन और प्रूव किया एस.एल. मिलर ने इन 1953. मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड बाय सिमिलर condition in laboratory scale. He created an electric discharge in a closed flask containing CH4, H2 and ammonia, NH3. Water vapor at 800 degrees Celsius is observed formation of amino acids. बात करें हम नेचुरल सिलेक्शन की तो चार्ल्स डार्विन इन 1831 to 1836 5 साल के लिए अपने सी वॉयज समुद्री यात्रा में HMS बीगल शिप में बैठकर गैलापागोस आइलैंड निकल गए और गैलापागोस आइलैंड पैसिफिक ओशन में है. डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी. उसने देखा कि डिफरेंट इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट एज. उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में स्ट्रगल होती है और कंपटीशन होता है इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक. उसके बाद कंपटीशन से बचने के लिए वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशन स्मॉल एंड डायरेक्शनल होते हैं, यूजफुल होते हैं. उसके बाद उन वेरिएशन से नेचुरल सिलेक्शन होता है और नेचुरल सिलेक्शन से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है. डार्विन के साथ साथ एल्फ्रेड वोलेस एट द सेम टाइम इसने मलाया आर्किपेगस आइलैंड गया था जो कि इंडियन ओशन में है. And Alfred Wallace also came up with similar conclusion, same as Darwin. Because Darwin is a father of evolution, इसलिए सारे ने डार्विन लोगों की सुनी, सारे लोगों ने डार्विन की ही सुनी. अर्नेस्ट हैकल इन्होंने दिया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बाय इन्होंने 2 लॉ दिए एक्चुअली, बायोजेनेटिक लॉ एंड रिकैपुलेशन थ्योरी. रिकैपुलेशन थ्योरी कहती है ऑन्टोजेनी रिकैपुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब embryological states repeat evolutionary history. According to biogenetic law, embryos of all vertebrates have similar structure like gill slits behind head. Later, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बोरर ने इसे लात मार के रिजेक्ट कर दिया because initial state common to all but later stage are not common. Embryos never pass through adult stage of other animals. During the journey, Darwin went to the Galapagos Island. Branching descents and natural selection are 2 key concepts of the Darwin theory of evolution. And before Darwin come, there is a theory of evolution given by Lamarck called as Lamarckism. Lamarck said that change in environmental force the organ to either develop a new organ or modify the existing one. The more we use organ, the more it develops. These characters that one acquired during the lifetime is also passed to the next generation. अब इस लमार्क को सबक सिखाने के लिए आया वाइजमैन ने 22 चूहे लिए और मतलब 22 जनरेशन ऑफ चूहे की पूँछ काटी, फिर भी 23वें जनरेशन में चूहे की पूँछ आ गई. तो ये इसने बोला कि जर्म सेल में चेंज करने से शायद कुछ हो जाए बट चेंज इन स्टोमोप्लाज्म से कुछ नहीं होगा, इसलिए लमार्क की थ्योरी फालतू है. देयर इज़ अ पॉपुलेशन थ्योरी गिवन बाय थॉमस माल्थस. इसने बोला कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकती है लेकिन वो रुकी हुई है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ नेचर. एंड पॉपुलेशन हमेशा स्टेबल रहती है एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशंस. एंड कोई भी इंडिविजुअल सिमिलर नहीं होता, वेरिएशंस सब में होते हैं बट मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल इनटू देयर नेक्स्ट जनरेशन. बाय द वे अपना डार्विन है, डार्विन थॉमस माल्थस के पॉपुलेशन थ्योरी से इंस्पायर्ड हुआ है या बोले इन्फ्लुएंस हुआ है, इन्फ्लुएंसर. म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय हुगो दे वेरीज. हुगो दे वेरीज सेड ये एल्फ्रेड डार्विन डैश है, इन्हें पता भी है इवोल्यूशन में वेरिएशन कैसे होता है. ये झिंगुर जैसे स्मॉल वेरिएशन से इवोल्यूशन नहीं होता, इसके लिए म्यूटेशन करना पड़ता है. ही वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज ऑन्थेरा लमार्केनिया. He said mutation results in evolution. He gave the term saltation for single step large mutation. Mutation are large and directionless. Weinberg principle. Allele frequencies in the population are stable and is constant for generation to generation. P plus Q is equal to 1 and P square plus 2PQ plus
Q square is equal to 1, whereas P is equal to allele frequency of dominant allele and Q is equal to allele frequency of recessive allele. Unit 8 started. Final unit. Nah, not final. Norman Borlaug, aka father of Green Revolution, initiated the collaboration with Mogambo Swaminathan. Mogambo Swaminathan is a father of Indian Green Revolution. इन दोनों ने मिलकर introduced the Mexican variety of wheat in India. Greek like Hippocrates and Indian Ayurveda system black belt कर रहे थे, पता है ना. फिर विलियम हैररमैन ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन. मैरी मेलन जो कि है टाइफाइड मैरी, विडाल टेस्ट से पता चला था, पता है ना. Alexander Fleming worked on the Staphylococci bacteria and also penicillium was the first antibiotic discovered by them. Ernest Chain and Howard Florey, full potential of the antibiotic was established by them. Stanley Cohen and Herbert Boyer, construction of the first recombinant DNA accomplished by this in 1972. Ramdev Mishra, father of Indian ecology. Verhulst Pearl, given the logistic growth curve, sigmoid curve. Gauss competitive exclusion principle. He said that when two species compete, any one which is inferior get extinct. Cornelius field experiment. Competitive release. He said that if superior is removed, competition release causes the increase in number of inferiors. MacArthur's show 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral difference in the foreign activities. Lindemans in 1942, 10% law follows second law of thermodynamics. He says only 10% of energy from one tropic level is transformed to the next tropic level. Edward Wilson, a sociobiologist, popularized the term biodiversity to describe the combined diversity at all levels of biological organization. IUCN in 2004 described that total number of plants and animal species described far is slightly more than 1.5 million से ज़्यादा. Robert May, some extreme estimate range from 20 to 50 million, but more conservative and scientifically sounded estimated made by Robert May placed global species diversity at about 7 million. Alexander Humboldt, great German naturalist and geographer, during his pioneer and extensive explorer, he said that Alexander Humboldt observed that within a region, species richness increases with increase in explored area, but only up to a limit. David Tiltman, long-term ecosystem experiment, using outdoors plots with more species, less year-to-year variations, biomass than plots with less species. Higher density contributes higher productivity. Species increase, stability increase, variation decrease. Species decrease, stability decrease. Paul Eichler, river puppet hypothesis, वो एयरप्लेन वाली. IUCN Red List document the extinction of 784 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants in last 500 years. Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro. World Summit in 202 in Johannesburg, South Africa. 119 countries pledged their contaminant to achieved by 210. All scientists name done. Now साल बाकी है, years. R.H. Whittaker 1969, Dimitri Ivanovsky 1892, M.H. Bizarnik 1898, W.M. Stanley 1935. Viroid in 1971, 1838 Matthias Schilden, 1839 Theodor Schwann, 1954 Linus Pauling, 1855 Rudolf Virchow, Singer and Nicholson, 1972, 1915 cell microscope discovery, electron microscope, 1831 nucleus discovered, 1898 Camillo Golgi bodies, 1953 Pallade particle discovered, 1953 second structure of DNA by Watson and Crick, 1770 Bell-jar experiment and 1774 oxygen discovered, 1854 Julius von Sack-Capota,
1905 Blacksman, Law of Limiting Factor. 1926 E. Kurosawa, Bacchini disease, foolish seedling disease. 1955 Miller discovered carnitine. 110 cousins को अंदाज़ा लगा about ethylene, सिर्फ अंदाज़ा. 1951 family planning were invented. 1856 to 1863 जॉर्ज मेंडल 7 ईयर का काम and 1865 काम publish. 1900 जॉर्ज मेंडल rediscovered. By 1902 chromosomal movement. 1891 Hanging discovered X chromosomes. 1866 Langdon down. 1869 Frederick Misher. 1928 Frederick Griffith, चूहे वाला. Erie McLeod and McCarty 1933 to 1944 Gary experiment. Hershey and Chase 1952. Messelson and Stahl 1958. Taylor 1958. 1919 to 2003 Human Genome Project. May 2006 sequence of chromosome 1 were completed only. 20 billion year ago universe created. 4.5 billion year ago earth created. 4 billion year ago, like 500 million years after the earth beginning. 4 billion year ago life appears on earth. 3 billion year ago non-cellular form of life earth. 2 billion year ago cellular form of life come on earth. 500 million year ago invertebrates form. 350 million year ago jawless fishes evolve, fishes with stouts and strong fin. 320 million year ago seaweeds and few plants. In 1938 South Africa में Colean fish was discovered again. 200 million year ago fishes like reptile Ichthyosaurus exist. 65 million year ago, not 67, 65. 65 million year ago dinosaur exist. सबसे पुराने हैं राम जी इसलिए और राम सूखे हैं इसलिए ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस exist 15 million year ago. Australopithecus 2 million year ago ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड पे रहते थे. होमो हैबिलिस 2 million year ago. होमो इरेक्टस 1.5 million year ago. निएंडरथल मैन 1 lakh to 14k year ago. Ice age 75 to 10k year ago. So निएंडरथल and ice age वाले होमो सैपियंस exist together at same time for a while. Cave art like Bhimbetka in 18k year ago. Agriculture 10k year ago. Aquatic mammals whales, dolphins, seals, sea cow. Now talking about the brain, Homo sapien has 650 to 800 cc. Homo erectus 900 cc, and there is a fossil discovered of Homo erectus. We called it as Java man. It discovered in 1891. And Neanderthal man has 1400 cc brain. It exists in East and Central Asia. 1981 AIDS discovered for the first time. The infected person from AIDS may remain asymptomatic for few months to many years. Tobacco has been used more than 400 years from now. Period between 12 to 18 years is adolescence age. 1954 Nobel Prize was awarded to Fleming Chen, and that antibiotic was used by treatment of American soldiers wounded in World War II. 1963 restriction enzyme discovered. First restriction endonuclease is HIND2, whose functioning dependent on species DNA nucleotide sequences was isolated and characterized 5 years later. Today we know 900 restriction enzymes that have isolated from 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. At present, 13 recombinant therapeutics have been approved for human usage for the worldwide over. In India, 12 of these are presently being marketed. 1990s, first clinical gene therapy given to the 4-year-old girl with ADA, adenosine deaminase deficiency. 1997, transgenic cow. 2 lakh varieties of rice all over India alone. 27 documented varieties of basmatis are grown in India. 1997 US patent to the basmati. 1981
R value, human population in India was 0.0205. Early 1920s, prickly pear cactus introduced into the Australia. In 2004, IUCN said 1.5 million एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलाकर होंगे. रॉबर्ट मे सेड कि 7 मिलियन हो गए सारे स्पीसीज मिलाकर. Later, Robert May said 22% of species have been discovered. 1953, Miller and Urey experiment. Mid-1916, Green Revolution. 1916 to 200, wheat production increases from 11 million to 75 million tons, and rice increases from 35 million to 89.5 tons. 1963, semi-draft varieties of wheats, Sonalika and Kalyan Sona, introduced in India. 200, maize hybrid with 2x amount of amino acids and lysine and tryptophan developed. 1950s, totipotency.